Uh, so we have come here multiple times. So I think two parts. Is it okay to use Hindi and English both, or only English? बंगाली आती नहीं भाई अभी. So चलेगा ना? हाँ फिर ठीक है. तो पूछना जरूरी है. So I think it's important कि हम we should be able to understand each other. So multiple visits, but I think most excited this time because we've started our INFINIX 2.0 and we've been launching some really crazy products. आपने एक ये भी देखी होगा. I mean, you saw what we ended up doing in 2022. So this is a brand which we have started a long time back. So I'll just quickly take you through what Infinix is all about, the whole global story of Infinix, and what we have been doing in India as well. Then I'll have my colleague Kamal, who heads the product. He'll talk about the launch for which we have come here today, Hot 30i, the smartphone kebab as we call it right now, and that's because that's the DNA of what we at Infinix stands for. So let's quickly run with this. So Infinix, I just quickly ask how many of you really know Infinix, not the partners? Uh, Media friends, bloggers, how many of you really heard or used the brand? बिल्कुल नहीं. चलो, few hands, good. Thank you. And so we have Infinix is a part of Transsion Group. So Transsion is, if I talk about some numbers, Transsion is present across close to 70 countries right now. And अगर हम 70 countries की बात करें, that means we cover most of the emerging markets, and it's not limited to only one part of it. We are present across South America, Southeast Asia, Russia, the new markets which we entered, Europe now as well. Of course, Africa is our biggest market, and we command roughly 46% share in Africa alone, and taking on the biggies of so-called this market. And so I think every year, last year when I was talking to people in media, we were close to 50, 55 countries. So now this list has gone to 70 plus countries now. Some numbers, I think numbers are always exciting for our media friends. So Transsion is, if you see on the screen, number 6 globally in terms of shipments, 197 million. Our market share in 2021 was close to 6.1%. And in Africa, as I mentioned, we are close to 46.7%. Bangladesh also we are number 2, close to 40% plus. In India, we are rapidly expanding. I think this 7% with the new partners and what we are trying to do with the offline foray. I think this number will change dramatically as we end 2023. And we have 3 R&D centers globally. We have 4 manufacturing centers. And by the way, every phone being sold in India is made in India. We have 3 factories in Noida. The whole investment is done by Transsion. It's not like some other brands who get it made through a third-party companies. We have done our own manufacturing investment, and close to 5 to 7,000 people work there as well. So the India story, I think probably one of the last brands to really enter India, and when we entered in 2017, the first question which was asked was, why are you entering India? It's a crazy market. And आप कैसे लड़ोगे? So I think that was the day, and today we still stand here and proudly creating the story, and the numbers tell the story actually. So every year we have been trying to outsmart ourselves only. I think the growth has been close to 100% every year. Even the toughest year like 2022, we've been able to maintain what we did in 2021 against the how industry went. So I think overall we are at a very very solid wicket right now. That's what we believe. And ये story इसलिए बन रही है because this is something which we have been really doing. So these are the numbers in terms of product. We see 3 smartphones in 2017, and now we have 3 categories of products. 30 plus smartphones. We have
15 plus laptops, and we have close to 6 smart TVs right now. So these are the numbers, an absolute thing, but I think the important part for us is how we've been able to build this story. And when I talk about numbers, there are two things which are very important. What you see on the screen is our journey. Because offline foray we have just started and we are going into offline market. Online is what we were doing for last 4-5 years. And with Flipkart as a partner, and we have not really changed any partners, partner we started with. We were top 4 smartphone brands in Flipkart alone. And when we launched laptops, the same question was asked, and we ended up being number 4 brand in Flipkart in 1 year. So against the big daddies of laptop business as well. So the confidence stems from what we are able to do and how we are able to do this. So एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जो हम इंटरनली भी हम what we keep asking ourselves, how do we grow, what do we do differently to make it happen. And the story is what led to this growth. Only one part. I think we are not, if you just create normal products, it does not change anything. We try to build solutions and not only products. And solutions का मतलब ये नहीं है कि हम software solution बना रहे हैं. We are trying to find what is the missing link, क्या चीज़ है जो हमें for a consumer, what is the most important thing. So very very important for us to get this right. So I think this is something which is very critical in our thought process of what we do. So let's look at what we have. Smartphone business, we have the whole series running. We start from Smart, which is our entry level product. Then we have Hot series. जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, the Hot 30i, which we will talk about in some time. We have the Note series, which is the biggest performance, and we talk about performance in gaming. Zero is our flagship experience, and then we have those and laptops and TVs as well. By the way, Zero is our overall story on flagship, and we have products on smartphones, laptops, and TVs. So Zero Book, Zero QLED TV, and full Zero series of premium products, which is lying in the flagship series right now. Is not moving. Awesome. These are the partners we have worked with. So one of the things when we started this 5G story was कि what do we do? 5G के बहुत सारे products आ गए. Everybody said कि we are a 5G phone, but a lot of people don't know bands are very critical. अगर आपको 5G use करना है seamlessly, you need to have certain number of bands, and which is important to be used across the players which are available in the market. So I think we started this कि हम पूरे बैंड लेके आएंगे. We started our journey late, but we got 12 bands. तो जितने भी हमने स्मार्टफोन निकाले हैं, that's a mandate which we have. कि we will not shortchange the consumer and we'll come out with a proper product whenever we launch one. So you will look at this whole 5G range. I think we would be probably the only player to start this series so aggressively on 5G. आज की डेट में कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है? Everybody is looking at 5G, that's a new technology, and we want to make that 5G journey easy for a consumer. So that's why you see Hot 20 starts at close to 12,000 rupees, and we have all the way which goes up to Ultra at 32,000-33,000 rupees. So that's the full portfolio with which we are sitting. And this is the current portfolio, and we will continue to add very, very exciting products in 5G series as we go forward. Thank you. So let's talk about redefining the premium segment. I think all of us know, and I'm sure all of you will be using the premium phones where you pay a lot of money. The only thing is we define premium in a different way.
we talk about premium should be in terms of what features or value proposition you get, but you don't have to sell your kidney to make it happen. So objective very simple है. How do you give a right value proposition in a budget segment? I'll not say budget segment, but I'll say value proposition. So zero is our entry into premium. When we say premium, we have last 3-4 months back, we launched the Zero Ultra. I think this was the world's first 180 watt commercial charger. इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि today all of us use our phone very extensively. हम use करते हैं मीडिया के लिए, consumption के लिए, and other things. We like to watch a lot of movies and other things, and we are always on the go. So you don't have time to really take care or charge your phone, and that's one of the biggest problem which we used to see. So this phone, when we launched, this is capable of charging your phone 0 to 100 in 12 minutes, flat. You are on a break and you are just grabbing a cup of tea, you can charge your phone 50% in less than 5 minutes. So that's the value proposition. So baki, all the other things which are required, 200 MP OS camera, the 180 watt thermal charge which I talked about, and you have 120 hertz curved display, and so on and so forth. So very, very highly capable phone, and we got the response which we thought we will not, but people loved it. So I assume people are looking for that differentiated products, and they really don't want to spend that kind of money to buy a premium product. We launched another one, world's first, with 020, which is made for people like you. I think all the media fraternity, bloggers, people who love to take selfies, who love to create content, because content is the biggest story right now. आपको मेरे को हम content consume करते हैं सारा दिन. So there are people who create that kind of content. So this is made for vlogging or people who love to create content. It has world's first 60 MP OS camera. And I think if you would want to have a look, the design is probably one of the most stunning phones we have made, and it has the whole camera capability and the fast charging and so on and so forth. So I think the story which I'm trying to say is we don't need to really pay crazy amount of money to do this kind of stuff. It is only you get the how do you create that value proposition for the consumers. Similarly, 05G series continues, again another product made for gaming. 1080 below 20,000 first time, 825, 8 GB RAM, 256 GB ROM. So these are the kind of things which we are doing, trying to create a differentiated story for people who are willing to look at as an alternate to what they see in the market right now. And our recent launch, what we did last month was been a blockbuster for entry-level people who try to buy their first phone, or they're moving up in the ladder, feature phone to smartphones, or somebody who wants to upgrade and you don't want to spend money. For 7,500, you get a whole crazy lot of things here, which is 4 GB plus 64 GB RAM plus expandable by 3 GB, 6,000 mAh battery, a big screen, a crazy looking design. So I think all in all, the story is we want to create that value, we want to differentiate, we don't want to be someone who just cut paste the product. That's what we are trying to do as a brand. Other categories, just a snippet, long story short, I think great journey for us on smart TV portfolio. We start at 6,700 to right now 40,000 rupees, and we cover the whole spectrum. And similarly for laptop, it starts at 20,000 to close to 100,000 rupees right now. And in fact, we launched the first i9, which was priced below Sare product. Normally i9, if all of us know, it starts at 1,30,000, 40,000. We launched the product at less than 90,000 rupees. So I think that's what our core strength is. How do we create that value? And we'll continue to do that. The quality, a small snippet of our factory, since I talked ki hamari factory hai Noida mein. This is just a small snippet of what happens, how we make our products in India, and so probably you'll see a few products getting tested here in this smaller snippet. Thorough testing on quality and other benchmarks which are required to make sure the quality is top notch.
The 020 getting packaged right now. This is our testing lab wherein temperature testing and other things happen. This is checking on the USB, so pressure testing on the quality. This is a test which a lot of bloggers do, and we also do at our end to ensure we give them the good product. This is 020 getting done right now. So this is just a small snippet of how the whole factory works. Probably sometime we get time and we can take you around and show you the factory as well. So this is what we have earned in 5 years. This is what customers talk about. I think हमने online buying हम करते हैं. Whatever product we buy, the first thing which we look at is by rating क्या है. लोगों ने उसको use किया. What is the quality? What are the parameters? How they evaluate it? And we are very, very proud. In fact, that's something which comes to us as a feedback from all the partners we work with. The product quality is top notch, 4.3 rating, average selling to more than 10 million consumers is something which does not happen very easily. And these are the partners who have been working with us for long, and we have been associated Flipkart, Jio for our association on 4G and going forward 5G maybe. And Intel has been a partner for all our journey in the laptops. So, second important part, I think product, the whole story, बहुत सारी चीजें बोली मैंने, but I think important part for making any decision for consumer is the service network. And I think we bring you probably the second biggest network, whatever we know. We have close to 1250 service centers across 1,000 plus towns. In fact, West Bengal also has one of the biggest coverage which we have. I think 74, 75 service centers are here. So I think service has been paramount. Or within our group we have Palcare, through which the service is done. And we are probably the only company which gives you embedded service app. Embedded का मतलब आपके phone में service का app है. You just have to open that and find your nearest service center and anything else which you need from a service perspective. So that takes care of the service needs. वैसे जरूरत पड़ती नहीं है because I think we probably have one of the least cases on DOA in the industry. So I told you about the 11 million plus happy customers which we serve right now. Small things on awards. I think all of us know how awards work, and there are a lot of industry awards. One thing, probably which stands out for us is this, and we got it recently, which is the Game Changer brand of 2022, and it was a User's Choice Award presented by 91 who buys Indian Gadgets Award 2022. And if you look at the brands which we were competing with, some of the more known names and consumers voting for us, I think that tells you are doing something really right. And in terms of what we stand for, in terms of what brand is trying to do for the consumers. So we really love this part of the journey. So I think what's next, all of us are waiting. I'm not taking too much of time. Just talk about West Bengal, which we are launching. Our foray with offline partners, we have our partners here, sitting here, and we'll talk more with them after we are done with the presentation. But we plan to cover West Bengal like nothing. In fact, we are looking at covering close to 70% retail coverage over a period of next 3 months. So that's the objective, that's the plan, and we probably have one of the best partners in the industry right now working with us and partnering with us to take this journey forward. So we look forward to this journey, and now let's talk about Hot 30i very quickly. I'll ask my colleague Kamal Pandey to come. He heads the product. He'll take you through this product journey, and then we unveil. Thank you so much. Thank you very much, sir, for a brief introduction about the brand, what we have been doing, the overall journey for India. Hi everyone, very warm welcome to all of you, and thank you very much for being here today for the launch of a blockbuster phone, which is Hot 30i.
So I'll be talking about the product in detail, and after that we will have a sort of a product photo op session, and then you probably also can experience the blockbuster smartphone ka baap, that's a smartphone what we call. And one of the starting point, I think that has been one of the key reason for our success in India is something we just do not launch the product. We always focus on the solutions की consumers की problem क्या है और इससे हम क्या solve करने वाले हैं consumer के लिए. तो Hot 30i भी जब लॉन्च हो रहा था उससे पहले हमने सोचा कि एक काम करते हैं, फोन को लॉन्च नहीं करते, फोन से पहले दो जो एक पहलू है, जो पैरामीटर्स है जो कि कंज्यूमर इवैल्यूएट करता है लेने से पहले, उसके प्रॉब्लम क्या है और क्यों फोन को अपग्रेड कर रहा है. तो हमने दो चीजों पे ध्यान दिया. एक था कि इंडस्ट्री इनसाइड, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, और उसके साथ में कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये आप सबको पता है फोन सब 10 के प्राइस सेगमेंट का है. तो सब 10 के प्राइस सेगमेंट में क्या हुआ 2022 में कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब सेम प्रोडक्ट बार बार आ रहा है, नए सीएमएफ चेंज हो जा रहा है. हमारे टेक ब्लॉगर्स हमेशा बोलते रहते हैं भाई कुछ तो नया करो. सो दैट वाज वन ऑफ द आई थिंक की चैलेंज हमारे हाथ में. एंड कंज्यूमर को लगता है कि यार कुछ नया नहीं आ रहा है, सेम बोरिंग फोन, थोड़ा सीएमएफ चेंज कर दिया, एक फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड कर दिया, एक कैमरा मॉड्यूल को ऐड कर दिया, बोल रहे हैं नया. और इससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर का रिप्लेसमेंट साइकिल वो भी बढ़ गया था. 12 से 14 महीने में हर एक कंज्यूमर नॉर्मली पहले फोन चेंज कर लेता था, वो लगभग 2 साल तक चला गया. और जब कंज्यूमर फोन चेंज करता है, ये हमने इसको स्टडी किया. दूसरा जो पहला पहलू जो इंडस्ट्री के बारे में था, जो दूसरा एस्पेक्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर फोन क्यों चेंज करते हैं. तो ये एक हमारे रिसर्च का एक एनालिसिस निकला जो कि था कि लोग चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि बोलता है कि अब मेरा फोन बहुत स्लो चल रहा है, फोन में लैग हो रहा है, जब मैं फेसबुक चला रहा हूँ या मैं इंस्टाग्राम या मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो फोन बहुत स्लो चल रहा है, फोन में बहुत लैग आ रहा है. और जब हम मल्टीपल ऐप्स को खोलते हैं तो बहुत ज्यादा ऐप क्रैश हो रही है. फिर हम सर्विस सेंटर जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, बट सोल्यूशन नहीं मिलता है. मेमोरी स्पेस कम हो जा रहा है बिकॉज हम सब इतनी सारी रील्स बनाते हैं, इतने सारे फोटोग्राफ्स खींचते हैं, व्हाट्सएप इतने सारे डाउनलोड सबको मिलते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी बढ़ जाती है. ओवर द पीरियड आपका बैटरी बैकअप खराब हो जाता है, आपकी कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिस्प्ले में इतना कंटेंट कंजम्पशन आप कर रहे हैं और मजा नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये सेगमेंट में जो फोन खरीदता है, कंज्यूमर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन को ढूंढता है. वो एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढता है जो कि कम से कम 2 साल तो चले और 2 साल में उसके घर में कोई और फोन को यूज कर ले. उसको एक टाइप का फोन नहीं चाहिए, उसको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए जो कि फ्यूचर रेडी हो. तो हमारे पास क्या चैलेंज था, हॉट 30i को करने से पहले हमने बोला ये फोन हम बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा. विल हैव टू फोकस ऑन द इनोवेशन, एक बैलेंस प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि फ्यूचर रेडी हो. अब ये सब करना पड़ेगा तो सेगमेंट को भैया डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जो बाकी ब्रांड कर रहे हैं उससे कुछ हटके हमें करना पड़ेगा. कहने का मतलब क्या है कि हमें एक हीरो मॉडल को बनाना पड़ेगा. वो हीरो मॉडल एक ब्लॉकबस्टर होना चाहिए. हम कह रहे हैं वो स्मार्टफोन का बाप है, एक ब्लॉकबस्टर फोन होना चाहिए जो कि कंज्यूमर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और सेगमेंट को डिस्टर्ब करे और कंज्यूमर को एक सोल्यूशन दे जो कि फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन हो उसके लिए. सबसे जो पहला काम हमने किया, क्योंकि डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने ऑनलाइन से हमारी लर्निंग रही है एंड ऑफलाइन में इस चीज को बहुत ध्यान में दिया जाता है, स्पेशली जब भी कोई कंज्यूमर रिटेल आउटलेट पे फोन खरीदने जाता है. ये हम सब लोग यही काम करते हैं, फोन का लुक देखते हैं कि फोन दिखता कैसा है. तो हमने बहुत ज्यादा काम किया, इसके डिजाइन पे बहुत फोकस किया और इसमें आपको बहुत प्रीमियम डिजाइन मिलता है, जिसके पीछे अगर आपको देखेंगे तो डायमंड कट आपको पैटर्न दिखेंगे और इसमें एक लेदर लुक लाइक फिनिश भी आएगा कि बहुत प्रीमियम डिजाइन है. तो डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज कंज्यूमर जब फोन को लेके जाता है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहता है बाकियों से. इनफैक्ट हमारे जितने भी टेक ब्लॉगर्स यहाँ पे बैठे हैं, फोन डब्बा खोलने से पहले फीचर की बात नहीं करते, सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, भैया ये फोन दिखता कैसा है. इसके अंदर आपको 4 बेहतरीन कलर मिलेंगे. अभी इनिशियली आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर मिलेगा, बट इवेंचुअली हम इसमें मैरीगोल्ड एंड व्हाइट कलर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि फोन स्लो चल रहा है, फोन में बहुत ज्यादा लैग है, इसका मतलब एक कंज्यूमर को एक ऐसा फोन चाहिए जो कि मल्टीटास्किंग कर पाए. और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री का, इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है. हम सब ने सुना है 2 GB की रैम, 3 GB, 4 GB, हाँ इसमें 16 GB की आपको रैम मिलती है. 8 GB की इनबिल्ट रैम है जो कि LPDDR4X रैम है और 8 GB का आप और रैम को बढ़ा सकते हैं. तो इससे क्या है कि फ्यूचर रेडी हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं कि अब 16 GB से ज्यादा तो रैम नहीं लगेगा किसी भी सेगमेंट पे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ध्यान दिया ताकि उसको एक बेहतर फोन मिले जिसमें वो मल्टीटास्किंग को कर पाए.
साथ में स्टोरेज मैंने दूसरा एक मेन पॉइंट बताया था जो हमारी रिसर्च से निकला था, जिसमें कि आपको 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। आपको जितना भी डेटा स्टोर करना है, आपको लिमिटेशन नहीं, कोई डाउनलोड डिलीट नहीं करना है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, प्लीज आप सब डाउनलोड करके देखिए, मेमोरी नहीं भरेगी। अगर फिर भी भर गई तो इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है। आप 2 सिम कार्ड्स को लगा सकते हैं, साथ में एक मेमोरी कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, जिसको कि आप 1 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो फोन एक ऐसा है जिसमें कि 16 जीबी की रैम, 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है और मेमोरी कार्ड आप 1 TB तक का इसमें मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ब्रांड्स इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को हटा देते हैं डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हमें एक बैलेंस स्मार्टफोन बनाना था, हमने इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड किया है और फिंगरप्रिंट सेंसर हमने रियर से हटा के साइड में कर दिया है, क्योंकि जब भी आप अपना स्मार्टफोन कोई भी पकड़ते हैं तो सबसे पहले आपका थंब पावर बटन पे जाता है, वहां पे हमने इसका एक फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड कर दिया है, जिससे कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए किसी भी फोन को अनलॉक करना, और ये ओवरऑल डिजाइन को काफी और अच्छा बना देता है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम लोग कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है जो 6.6 इंच की है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है, जितना भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप गैलरी में ब्राउज कर रहे हैं, आप वेब पेजेस को वेबसाइट देख रहे हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स को देख रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है। और साथ में 180 हर्ट्ज का इसमें आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जो आपका ओवरऑल जो गेमिंग आप जो करते हैं, एंट्री लेवल गेमिंग करते हैं, उस एक्सपीरियंस को और बेटर बना देता है। साथ में 5 मिनट्स की ब्राइटनेस है। अगर आप फोन हमेशा घर के अंदर नहीं देखेंगे, आप आउटडोर सिनेरियो में जाएंगे, धूप में भी देखेंगे, तो आपको फोन में देखने में आपको कंटेंट देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैमरा है। अगेन कैमरा में लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं। मैंने बताया कि ये टाइम ऐसा है, लोग कंटेंट देखते ही नहीं, क्रिएट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि कैमरा कैपेबिलिटीज भी काफी अच्छी हो। और इसमें मुझे बताते हैं खुशी होगी, इसमें 50 MP का डुअल कैमरा आता है कुछ डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ में, और फ्रंट पे इसमें आपको 5 MP का कैमरा मिलता है। कैमरा के मल्टीपल फीचर्स लोडेड है, मैं सबकी बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे अपने फिल्टर्स को ऐड कर दिया है, जो कि आपको एक सोशल मीडिया वर्दी आपको वीडियो रील्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। अब रही बात परफॉर्मेंस की, आपने ज्यादा रैम दे दी, ज्यादा स्टोरेज दे दी, एक बहुत अच्छा आपने इसमें कैमरा दे दिया, तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपका फोन लंबा चलना चाहिए, आपको बार बार चार्ज ना करना है। इसमें से आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपका पूरा दिन निकालती है। अगर आपने रात को चार्ज किया, हटाया है सुबह, आप पूरा दिन आपका फोन चलेगा। और साथ में जो आपको टाइप सी चार्जिंग है, जिससे कि आप डेटा प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाती है, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आपको दिया गया है। साथ में इसमें एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक बैलेंस CPU मिलता है, मीडियाटेक का G सीरीज का Helio G37, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, लेकिन आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। अब रही बात सॉफ्टवेयर की, अगर आपका इतना अच्छा हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको Android 12 मिलता है, साथ में इन्फिनिक्स का कस्टमाइज UI मिलता है, जिसको हम XOS बोलते हैं। XOS 12 आता है, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स आते हैं। अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं जो कि मेरे फेवरेट है, जिनको मैं हमेशा यूज करता हूं, जो Xclone है, एक डुअल ऐप। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डुअल सिम वाला फोन यूज करते हैं, जाहिर सी बात है 2 सिम कार्ड उसमें यूज करते हैं। 2 व्हाट्सएप भी चलाने होते थे, अभी तक 2 फोन रखते थे, तो हमने बोला इसमें आप डुअल व्हाट्सएप का ऑप्शन दे दीजिए। सेम फोन में आप 2 व्हाट्सएप के अकाउंट को आप चला सकते हैं, सेम फोन पे आप 2 फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, टेलीग्राम भी इसमें आप चला सकते हैं। अगर मैं समअप करूँ ये स्मार्टफोन को, तो इसमें आपको बहुत प्रीमियम डिजाइन मिलता है, डायमंड कट डिजाइन के साथ में आता है, जिसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, 8 GB प्लस 8 GB, और इसमें आपको 128 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है विद ट्रिपल कार्ड स्लॉट। एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि 6.6 इंच की है, जिसमें 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, G37 के साथ में आता है, और इसका डिजाइन एंड मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ में आता है। रही बात इसके प्राइस की, ये स्मार्टफोन जिसको ब्लॉकबस्टर स्मार्टफोन का बाप कह रहे हैं, ये आपको 9499 में मिलेगा, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और आपके स्टोर नियर में आपको मिल जाएगा। इसकी पहली जो सेल होगी वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फोटो के लिए वी कैन जस्ट गो फॉर इट, उसके बाद में वी कैन हैव द प्रोडक्ट डेमो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।